Hello students, out of a set of 5 different financial statements, I am going to explain you here in this example to 3 of them. Before we understand the construction of these 3 financial statements, that is income statement, a statement of retained earnings and balance sheet, I want you to keep in your mind that in this trial balance there are three accounts have been added as compared to example 2. The sales return, transportation in, and purchases return. Sales return is contra revenue account. We use the word contra because it reduces the value of revenue, that is total sales. There are writers who also used to say it is an expense account. Why? Because it reduces the profit. So you may use the word the contra revenue account for the sales return or an expense account. Similarly, the transportation in, on purchase of 2,40,000 inventory during this current period, we also have paid 8,000 for transportation. So it is an expense account. And finally, the purchase return account. The purchase return account is known as contra expense account. Why we are using here the word contra? Because it reduces the value of purchase. There are other writers who use to say the purchase return is a revenue account because as soon as the value of purchases return increase, the gross profit or the earning after tax also increases. So they say it is a revenue account. We can use either the contra expense account for purchases return or revenue account. So let's start now the construction of financial statement. One more thing, students, I want you to keep in your mind before the construction of financial statements, that is, all these items as shown here, I mean the sales revenue, the cost of goods sold, the gross profit, total other operating expenses, earning before taxes, earning before interest and taxes, interest, taxes, each and every item shown here in this 4 points, you have to write the result of all these items here in this column. Result of your net sales you can write here. Result of cost of goods sold we can write here. Similarly, the gross profit can also be, I repeat, the result of cost of goods sold can be written here, and the result of gross profit can be written here. I repeat, the result of cost of goods sold you can write here, and then the result of gross profit you can write here. Similarly, the result of other operating expenses you have to write here, and similarly all the items shown here in these 4 points, the results of all these items should be represented in a first column. The other items shown in your trial balance or adjusting data can be written here in these 2 columns, or you may increase the another column. Okay, now let's start how to calculate first of all the net sale. We can see here in this our example, any information is given related to sales. Yes, the sales revenue is given 5,25,000. I am writing here 5,25,000. Just copying, and then we can find the another information is related to sales also given, that is sales return. We provide this facility to our customer.
that they can return some defective or inferior goods to us. So here in this example, say the customer has returned the inventory worth rupees 12,000 to us. I am just copying the sales return. So now we can get the total net sale by subtracting sales return from the sales, and then the net sales for the current period is 5,13,000. I repeat, इसमें हमने सबसे पहले ये किया कि हमने देखा कि सेल से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और हमें पता चला कि सेल से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन गिवन थी। एक तो सेल्स रेवेन्यू गिवन था जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं, और एक सेल्स रिटर्न गिवन था। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है हमने अपने कस्टमर को पहले सेल किया था, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने हमें इन्वेंट्री का वापस कर दिया है जिसकी वैल्यू 12,000 है। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना था कि हमारी नेट सेल कितनी है या इस पीरियड में टोटल सेल कितनी है, क्योंकि हमें नेट सेल जो है वो उसके रिजल्ट इस कॉलम में लिखने थे, इस वाले कॉलम में। तो हमने बाकी कैलकुलेशन साइड के कॉलम पे करके हमने बता दिया कि इस पीरियड की हमारी नेट सेल ये है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई रिपीट, द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई एम गोइंग टू रिटर्न हियर, and all the other calculations before getting the result of cost of goods sold would be calculated on the other two columns. So let's start to calculate cost of goods sold. जब आप cost of goods sold calculate करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री एट स्टार्ट है। जी हाँ, बिल्कुल इस क्वेश्चन में हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री एट स्टार्ट जो है वो 40,000 है। तो जब साल स्टार्ट हुआ था, दैट इज न्यू योर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1st 2019, तो इसमें ये जो वैल्यू दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री की वो हमारे पास 40,000 है। आप जस्ट इसको कॉपी कर लें। वी आर जस्ट कॉपिंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम आवर ट्रायल बैलेंस। The next step now, you need to calculate total purchases or the net purchases for the current year. Again, in the second example, the values or the information related to purchase are given as purchases. Is the purchases for the current period 2,40,000. Then we have paid on these purchases the transportation charges that are rupees 8,000, and similarly we also provide the supplier also provide us this facility that we can return the defective or inferior goods to our supplier. Here in this example you may see in your trial balance it is 4,000. So now I have to calculate the amount of net purchases for the current period. How to calculate net purchases for the current period? You just have to write first of all the amount of purchases from the trial balance, that is 2,40,000. Then on these purchases we have paid 8,000 as transportation. We are adding the cost of transportation in purchases, and then finally the goods have also been returned to our supplier worth rupees 4,000. I am going to subtract this amount from our purchases. So now we can say the total purchases or the net purchases for the current period is equal to 2,44,000. How we have got the result of 2,44,000? I repeat again. हम एग्जाम्पल में देखें आप कि इस पीरियड में हमारी परचेजेस कितनी है। सबसे पहले हमने ओपनिंग इन्वेंट्री तो लिख लिया है, जस्ट हमने कॉपी किया है कि हमारे पास 40,000 की इन्वेंट्री इस पीरियड के स्टार्ट में पहले से रखी हुई थी, और हमने 2,40,000 की परचेजेस की है। जो 2,40,000 की इन्वेंट्री हमने इस साल खरीदी है, इसमें हमने 8,000 ट्रांसपोर्टेशन का पे किया है। जो ट्रांसपोर्टेशन की अमाउंट है वो ऐड हो जाएगी, तो 2,40,000 में हम 8,000 ऐड कर दें, ये हो जाएंगे 2,48,000। और क्योंकि हमने अपने सप्लायर को 4,000 की इन्वेंट्री वापस की है, जो 2,40,000 का हमने इन्वेंट्री खरीदा है
उसमें से 4000 की इन्वेंट्री हमने अपने सप्लायर को वापस कर दी, तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। इस तरह मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे साल में जो मेरी नेट परचेजेज है वो 2,44,000 की है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट ईयर की आपकी क्लोजिंग या इस पीरियड की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, हम कहते हैं चलें इस पीरियड का जो हमारे पास 40,000 का स्टार्ट में जो मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री था उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं जो इस साल हमने खरीदा है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा cost of goods available for sale, that is 2,84,000. I repeat, I have just added the opening inventory 40,000 and the net purchases of the current period worth rupees 244,000, and by adding both these 40,000 and 244,000 I got the result 2,84,000. It is cost of goods available for sale. Now you have to subtract the closing inventory that is available. You can see the amount of closing balance is available in the additional data, that is rupees 30,000. Here you can see the closing inventory, also called unsold part of the inventory, and it is equal to rupees 30,000. I am subtracting rupees 30,000 closing amount of closing inventory from cost of goods available for sale, and now I have got the result of cost of goods sold. Okay, and we have to keep in mind the result of cost of goods sold would be written here in this column. So this, and now the final, if I subtract the amount of cost of goods sold from sales, so we get the result of gross profit. I repeat, how to calculate gross profit of merchandising company. सबसे पहले हमें सेल्स को कैलकुलेट करना था कि हमारी इस पीरियड में सेल्स कितनी हुई है। हमारी 5,25,000 की सेल हुई थी, लेकिन मैं 5,25,000 को इस वाले कॉलम में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि 5,25,000 की सेल जो हुई है उसमें 12,000 की इन्वेंट्री रिटर्न भी हुई है, इसलिए मैं बराबर वाले कॉलम में गया इसके, और मैंने यहाँ साइड पे इसकी कैलकुलेशन की कि 5,25,000 की सेल्स में से अगर 12,000 की सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,13,000, जो कि हमारी नेट सेल हो गई। इस तरह से हमने सेल्स कैलकुलेट कर दी है इस पीरियड की। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जैसे ही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगा हम उसको सेल्स में से माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो स्टार्टिंग इन्वेंट्री है वो 40,000 की है, और इस 40,000 को हमने इस कॉलम में लिख लिया है। इसके बाद हमने ये चेक किया कि इस पूरे पीरियड के अंदर हमारी परचेजेस कितनी है, या यूं समझ लें हमारी नेट परचेजेस कितनी है। इस ट्रायल बैलेंस में हमें देख के अंदाजा हुआ कि सिर्फ परचेजेस गिवन नहीं है इंफॉर्मेशन में ट्रायल बैलेंस में, बल्कि इस पे 8,000 रुपये हमने ट्रांसपोर्टेशन के भी पे किए। वी कैन ऑल्सो से ट्रांसपोर्टेशन इन और फ्रेट इन और कैरेज इन, और इसी तरह 4,000 की इन्वेंट्री हमने अपने सप्लायर को वापस भी की है। तो इन तीनों को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो इस साल की मेरी जो परचेजेस बन रही है, जो नेट परचेजेस का अमाउंट बन रहा है वो 2,44,000 से बन रहा है। ये इस साल की परचेजेस है 2,44,000, और ये आपके पास इन्वेंट्री स्टार्ट में मौजूद थी 40,000 की। स्टार्ट की इन्वेंट्री 40,000 की जो मौजूद थी, और साथ साथ ये जो हमने परचेजेस किया, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,84,000। इसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये हमारे पास मौजूद है बेचने के लिए, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये जो अवेलेबल है इसमें से हमें जो कैलकुलेट करना है वो पार्ट कैलकुलेट करना है जो अवेलेबल में से हम सोल्ड कर चुके हैं। हमें कॉस्ट मालूम करनी है उस इन्वेंट्री के उस पार्ट की जो सोल्ड हो गया है। तो 2,84,000 में से हमने माइनस कर दिया अनसोल्ड पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री एट एंड और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री रुपीज 30,000। जैसे ही मैंने इसको माइनस किया तो मुझे आंसर मिल गया, जो कि मेरा टारगेट भी था कि मैं किसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लूं। और सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट।
सो यहाँ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि किस तरह से जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट